Assalamu alaikum students, I'm Sohail Ahmed Bhatt and we are going to resume our class for history section. As you know that JKSSB is going to conduct exams in near future in regarding this JKPSI and similarly for VLW, and now new notification has come for this forestry exams as well. जिसके अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं. Many students asked me questions, sir, what type of questions can be asked and what should we prepare for the examination, what should be our study material and what should be the course of action we should take into consideration while preparing for this examination. Well, all these queries will be answered in another lecture where I will have a full critical analysis. I'll be doing critical analysis of paper of syllabus itself and what has been asked in the exam question paper that was cancelled, and we'll go accordingly. We'll try to find out which books are needed to be taken up and which books are to be left, because we cannot pick all the trash. You need to be particular about your studies. You need to be concise, comprehensive and coherent regarding your preparation. That way you can do a smart preparation, save your time and can revise more. Because since we are in a lecture series today, we cannot afford to discuss in this lecture about that portion, but I'm promise that we'll be discussing in there too regarding the whole syllabus and what type of questions. But we'll do a brief analysis of those the syllabus and we'll be posting via different links. Please, for better preparation or preparation that will be specific to your examination and exam-oriented studies, please help me to reach this channel to the most of the people among your friend circle, so that they can also learn from these lessons, from these chapters. And you know, our lecture series as of now is taking two different subjects into consideration. One is economics, where we are almost done with national economic accounting. Hardly one lecture is left, and we'll be soon taking banking. And on other part, we're doing history. History, you know, is the most important amongst the most important core subjects where you always expect questions. Recently in JKPSC examination, which was held recently for KS 2022, or more precisely JK Jammu Kashmir Combined Competitive Examination Preliminary for 22, you must have seen that there were almost 16 questions taken up from history portion, and they were very comprehensive questions. They cannot be, that discrete level information is going to be wind up in coming time. That's not going to work out in any examination. Understanding the subject properly is the need of hour, and doing the MCQs with proper understanding and with proper analysis, that's only going to work. So without wasting further time, let's go to our discussion for today. That would be the economic life among the Delhi Sultanate, and this is very important topic for you. Please, so many things have taken place during the Delhi Sultans, which were introduced for the first time. Since these were introduced for the first time, they become important for your questions. So let's discuss about economic life of Delhi Sultanate. First thing you would have to notice that will be subject what type of economy it was. Was it a rural economy, was it an urban economy, or was it a mix? And while consulting different sources, we find that economic life was peculiarly urban in nature. That does not, when I say urban in nature, that does not mean that rural elements were missing. Because urban life, urban economy cannot sustain until and unless rural economy is also doing good. There is a brisk rural urban integration in almost all of the economies. So for
complete sustenance and proper sustenance or sustainability of urban economy, rural economy has to prosper, and we'll have to go accordingly. They discuss different aspects of their economy. Most of them will be urban, and while we will not ignoring rural characteristics as well. And I'll be discussing some introductions that were made in Delhi Sultanate, which becomes very important, which become very important for your examination, especially for combined computer examination. And that portion of the JKSSB where medieval questions or where medieval part is a part of syllabus. Now, primarily urban. In nature. But please mention it. When I say urban, that does not mean that rural characteristics were absent. That means rural characteristics were also present. And now we'll be discussing this economic life in terms of various features. And while I discuss about those features, I'll be also discussing things in detail regarding that particular feature. Now, features. Obviously, it was a urban economy, but does that mean that rural economy or rural characteristics was absent? No. So first thing we're going to discuss the primary sources of income were sources. We'll be seeing sources. If we see the sources, first source was agriculture. Now we'll discuss about the agriculture and how did they improve upon, what were the characteristics of the agriculture of that time. Because we know that taxes we know already, land revenue had to be paid, and some revenue obviously came from agricultural portion. So obviously agriculture becomes very important in their economy. Now, since we are not going to go taxation, we have discussed various aspects of their land revenue taxation during their political life. Today, we'll be studying about their particular characteristics of their agriculture. We have references of soil fertility. हमें किसकी references वहाँ मिलते हैं कि soil was, हमें बोला जाता है कि soil was very much fertile. जब soil fertile हुआ करती थी, these are references from रहला, that was a book composed by Ibn Battuta. तो वहाँ से हमें क्या मिलते हैं, तो हमें वहाँ से ये पता चलती है कि soil बहुत ही ज़्यादा fertile थी, इतनी fertile कि almost 2 crops were sown each year. 2 crops sown each year. Most of you would be knowing about this particular thing that 2 crops were sown each year, but rice was sown thrice a year. So rice जब मैं जामिया मिलिया में था यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, वहाँ जब हमें क्लास टेस्ट हुआ करते थे या जो टेस्ट जो प्रिलिमिनरी में लेते थे, तो ये क्वेश्चन उन्होंने वहाँ पूछा था कि उन्होंने डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी थी और वहाँ आइडेंटिफाई करनी थी करेक्ट स्टेटमेंट. एज फार एज आई रिमेंबर ये सवाल आया था कि राइस को लिखा था कि राइस वाज ग्रोन ओनली वंस अ ईयर, but that's not the case. When you read about the economic life, you have to read that in detail. Now अब यहाँ ये हो गया soil fertility के बारे में. अब हम different crops के बारे में बात करेंगे. You know, जब हम crops की बात करते हैं और already fertility है, तो you might have find और North India की जब हम बात करते हैं और कुछ South India की fertile area की बात करते हैं, वहाँ आपको पता थे कुछ अहम क्रॉप्स जो किया करते थे. दैट वाज राइस, वीट, ऑयल सीड्स, शुगर केन,
indigo, and various other food crops, etc. etc. तो खुद कर ये तो कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होते थे उस जमाने में, और इनमें से यहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राइस और शुगर केन हुआ करता था, ये आम तौर पर नॉर्थ एंड साउथ में दोनों जगह कल्टीवेशन होती थी। और आपको रिसेंटली यूपीएससी में ऐसा सवाल पूछा है GS1 में कि व्हाई शुगर केन इंडस्ट्रीज दे आर they were specifically their distribution, as far as the distribution about sugar cane industries, it was primarily seen in North India. Now they have recently shifted to South India, और इसमें पूरा डिस्कशन करके है 10th की ज्योग्राफी पे why this happened, तो वहाँ देख लीजिएगा। तो obviously it's not a footloose industry, तो वहाँ आप देख लीजिएगा कि ये अब इसकी जो अब डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रही है साउथ इंडिया में, व्हाट इज द रीज़न, तो उससे आपको फिर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो राइस और शुगर के नॉर्थ और साउथ में वो मीन्स इट्स नॉट अबाउट ओनली ये इस वक्त ये बात अभी हम साउथ में शुगर केन उगा रहे हैं, बल्कि दिल्ली सल्तनत के वक्त भी शुगर केन को कहाँ उगाया जाता था, साउथ में। और एक और इम्पोर्टेंट क्रॉप रादर डाई डज इंडिगो, मे बी यहाँ आप चक्कर मत ले, आप बोलेंगे नहीं ऐसा कहाँ होगा, तो आप सिर्फ इंडिगो रेवोल्यूशन के बारे में या सिर्फ इंडिगो के लिए जो रेवोल्यूशन आया था तो आप उसको रिलेट मत करेंगे शायद ब्रिटिशर्स ने ही इंट्रोड्यूस किया था यहाँ, नहीं, इंडिगो पहले भी कल्टीवेट हुआ करता था, मगर कहाँ, दिल्ली सल्तनत के वक्त हमें इसकी रेफरेंस मिलती है कि देयर हैज़ बीन द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। तो और इनमें से वीट और ऑयल सीड्स ज़्यादातर नॉर्थ में हुआ करते थे, ये दोनों ज़्यादा नॉर्थ में। इंडिगो आपको पता ही है, और सीसेम ये तो आपको पता ही है। और इन जो ये प्राइमरी सोर्स है तो दे हैव टू एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर industries, and they used to act as a raw material for food industry, they used to act as a raw material for jaggery making or weaving or dyeing, तो ये they acted as a raw material for various industries। कुछ कंजप्शन के लिए इसमें जो क्रॉप्स कंज्यूम किए जा सकते हैं सब्सिस्टेंस के लिए या उन कंजप्शन क्रॉप्स के अलावा, these crops acted as a primary these acted as a source of raw material for various industries। Means किसके लिए आ गए थे, एक तो दो चीजों के लिए, दूसरा कंजप्शन। प्लीज ये याद रख लीजिए। रॉ मटेरियल्स भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए यूज हुआ करते थे। सपोज फॉर ऑयल प्रेसिंग, ऑयल सीड्स को यूज किया जाता था ऑयल प्रेसिंग के, कॉटन को यूज करता था वीविंग के लिए, और ऐसे ही बाकी जैगरी मेकिंग के लिए भी यूज किए जाते थे इन क्रॉप्स को। तो आप देख लीजिएगा कंजप्शन कुछ क्रॉप्स दोनों जगह आप देखेंगे कंजप्शन में भी और रॉ मटेरियल भी एक्ट करता था। तो प्लीज़ कल को आप कंफ्यूज ना हो जाए स्टेटमेंट देखे, इसलिए मैं आपको पहले ही ये चीज़ ये बता रहा हूँ। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ अबाउट इरिगेशन सिस्टम, बिकॉज वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ इरिगेशन सिस्टम। आई एम श्योर कि इतना आपने नोट किया होगा। अगर हम इरिगेशन सिस्टम की बात करें, when we speak about irrigation system, आपको MCQ में दिया जा सकता है स्टेटमेंट that Rahata system or Agarahata that we saw in ancient India and early medieval India as well. So that was introduced during Delhi Sultanate. That would be completely a wrong sentence. Rather, Rahata system or Agarahata system that was improved. They improved that system. Improved
or agarat, same. Improved this system of irrigation, and though it was introduced earlier in ancient India, and we have a reference of this system in early medieval India as well. Which means this was not introduced by Turks, rather it was introduced earlier, but they only improved. But they also introduced their own system of irrigation, which is important for your examination, that is Sakya system. Sakya system. Sakya system is an important irrigation method that used to be seen, that was introduced in India during the time of Delhi Sultanate. Very important. Please go through these questions. These are direct. They can ask you direct questions in UPSC, JKPSC or JKSSB if syllabus falls within these limits. कि ये सिस्टम इम्प्रूव किया गया था, ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वहाँ टर्मिनोलॉजी बेस्ड हमें क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने देखा जब मैंने अभी JKPSC का रिसेंट कंबाइंड कंप्यूटर एग्जाम देखा, वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे स्पेशली विद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को. वहाँ से क्वेश्चन आए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अबाउट दिस वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी. उन स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज किया गया था, दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज बिकॉज ये आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है. जब आपको वरना पता होती है कि वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, मगर आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते या क्लासरूम में ऐसे डिस्कशंस आपको इस लेवल पे नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से फिर आप स्ट्रगल करते हैं. तो वी डोंट वांट आवरसेल्व्स टू फॉल इन दैट स्ट्रगल. We want things to be cleared at first instant. So please go through these lectures. These are very important, very comprehensive. You are going to see these questions either directly or indirectly in your UPSC exam as well. You are going to see them in JKPSC as well. Or in any case, whenever our syllabus, if the syllabus of JKSSB demands this level, you will find these questions in that exam as well. Now, let's shift our focus towards agents of agriculture. And you know the agents of agriculture are peasants. Now, two types of peasants. One was sharecropper. Sharecropper means they did not own their land, rather used to cultivate for some other. They used to cultivate it for others on the land of others. And some were prosperous peasants. We need to discuss about prosperous peasants as well. They were not so much prosperous, and about prosperous peasants we'll be discussing things in perspective. Those who were prosperous peasants, they were either original cultivators. When they were original cultivators or owners of, it means they must have been the owners, they must have been the original settler in that village. Now, means original settlers. Obviously, when they would have been original settlers in that village, then they could have owned a land. And then they would have used that land for agriculture, and naturally they would have, since their land would have been in ample quantity, it means they would have found themselves in quite a bit of a prosperity compared to sharecroppers. Original landowners. And we have seen two types of landowners among the prosperous. One was small landowners and other was large landowners. This can come a question. Please, this is very important.
Plus, he was also a village headman. Since he was used to have a lot of land, he was also chosen as village headman, and you must have a complete now you have idea about him who he was. Obviously, Mokdam was village headman. And he would have been Khud. Plus, there were also some Hindu landlords. They were known as Hindu Rais. They used to visit. We have a reference about Hindu Rais. They used to come to the court of these Balban. We have a reference. Aman, 1 minute, please. We have a slight bit of disturbance. I'm sorry, please. Because audio sound audio. आज रबुल कायनात के नो कारस बारस बरकत वलदात तुझे बीमार शफा यो यार बिचार कैंसर पेशेंट ये तलब रेडियो मैंने वीडियो कोयो ये तलब रेडियो माशा वीडियो It is sheer cropper. If it was not visible, please understand this is sheer cropper. ठीक खुद. And plus we are discussing about Hindu Rais. They were also landowners, though in different areas, but we have a reference of various landowners. They were known as Hindu Rais, and we have a reference of them coming to the court of Balban. Now, they also, these original inhabitants or prosperous peasants, they used to provide, Alauddin Khilji tried to curb their powers. But again, we have a reference during Firoz Shah Tughlaq, their powers were restored, and during Muhammad bin Tughlaq as well, we have a reference that their powers were restored. And they used to provide concessional rents, means they used not provide full rents, they used to provide concessional rents, and also used to dominate village panchayats. Means they were prosperous in many aspects, and we can see अगर इनको रेंट भी देनी पड़ती थी, कंसेशनल रेंट देनी पड़ती थी, और besides they also dominated village panchayats. Please, this is all about agriculture. Now we'll shift to other portion. I am hopeful that आपने ये पूरी तरह से यहाँ तक नोट किया होगा और पूरी तरह से आपको समझ आया होगा. तो अगर आपको कोई चीज़ विजिबल नहीं है, प्रॉपर विजिबल नहीं है, तो प्लीज़ आप हमें बता दीजिए, हम इसको और डार्क कर सकते हैं इस थीम को. ठीक है. Now let's shift to other discussion. Now we'll have a discussion about trade industry. This is properly visible. कोई भी पोर्शन इकोनॉमी में तब तक हम उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते जब प्रॉपरली हमें ये आइडिया ना हो कि उसकी प्रॉस्पेरिटी किस वजह से होती है, उसकी प्रॉस्पेरिटी किस वजह से होती है. नाउ
When we say about trade industries, जब हम ट्रेड इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, क्या हमें यहाँ एक चीज़ पूरा पता है कि देयर वाज इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन, वाज इट? अब करेंसी सिस्टम भी साउंड साउंड करेंसी सिस्टम बेस्ड ऑन सिल्वर टंका एंड कॉपर दिरहम. Based on silver tanka and copper dirham. Now, since these are very essential to give us a fair idea about trade industry during that time. And जब ये दोनों system well established थे, means their industry would have been flourishing. And what makes us to tell about this flourishing industry is that we have different trading centers which become urban centers. We have different types of trades that were going into the items. There we have different different items. We have reference of different items that were traded during their time. This helps us to understand the trade industries was very much flourishing in nature, and when trade industry flourishes, means urban economy flourishes, and it necessitated when urban economy again will have a positive feedback system that urban economy flourishing gives a reference to flourishing commerce, and this helped to develop feedback, positive feedback, one complemented another. And in this way, we said it our first reference, and first reference that that this was primarily an urban economy. That made us to this is please. Okay, now this is ये भी आपको आया, और कुछ अर्बन ट्रेड में आप कुछ अर्बन सेंटर्स हुआ करते थे, अर्बन सेंटर्स के रेफरेंसेस काम ध्यान दे कौन कौन से होते थे वो टाउन, अर्बन टाउन या अर्बन सेंटर्स वो कौन कौन से थे? दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, अनिलवाड़ा is in Gujarat, Cambay, Kara, Allahabad, UP, Astra. These were few urban centers that flourished during the time of Delhi Sultanate and which became main trading centers during that time. And trade was टाइप, अगर हम ट्रेड के टाइप देखेंगे, टाइप क्या था ट्रेड का, ये आपको पता होगा टाइप क्या था. टाइप बोथ डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड भी प्रेजेंट था. डोमेस्टिक ट्रेड मेनली इनलैंड हुआ करता था, मीन्स इनलैंड रास्तों के जरिए डिफरेंट आइटम्स रूरल एरियाज से टाउन सेंटर्स फिर डिफरेंट एरियाज को लिए जा सकते थे और या जाते थे. और जो फॉरेन ट्रेड था इसमें भी दो रूट्स का इस्तेमाल हुआ करता था. एक तो होता था वाटर रूट्स, दैट्स प्राइमरी सी रूट, ठीक, और ओवरलैंड. इसमें दोनों ओवरलैंड और सी रूट. ठीक, तो ट्रेड अरब के साथ डोमिनेट ट्रेड था, बट वी हैव रेफरेंस वेयर तमिल्स
एंड कलिंगा, गुजरात, उनके साथ भी अब हमारा ट्रेड उनने वहाँ अरब, चूँकि अरब्स के साथ हमारा ट्रेड ज़्यादा प्रॉस्परस था उस वक्त, तो वुड हैव थिंक थॉट कि मुस्लिम्स ही ज़्यादा ट्रेडर्स थे, नहीं, तो मुस्लिम ट्रेडर्स के साथ साथ बहुत सारे ट्रेडर्स हुआ करते हैं। विल बी मैंशनिंग अबाउट ट्रेडिंग क्लास अभी, तो मगर तो हम अगर हम डोमेस्टिक ट्रेड, तो आपसी कंट्री में जो दिल्ली सल्तनत का फ्रंटियर हुआ करता उस एरिया में कितना ट्रेड आपस में कौन से ट्रेडिंग सेंटर्स हुआ आपको पता ही है। जो में फॉरेन ट्रेड अगर हम सेंटर्स देखेंगे, मेन सेंटर्स क्या हुआ करते थे, चाहे ओवरलैंड रीच थी या सी रूट के थ्रू रीच थी, इट वाज पर्शिया, इट वाज सेंट्रल एशिया, it was West Asia, चाइना, सेंट्रल एशिया में वो आएगा, चाइना, ईस्ट एशिया में, एट्सट्रा। ठीक है, ये तो हमें पता है, ये हमें अर्ली एंशिएंट इंडिया से भी पता थी कि ये मेन ट्रेडिंग सेंटर्स हुआ करते थे। और यहाँ आप एक चीज़ की रेफरेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है कि ट्रेडर्स कौन कौन हुआ करते थे, मेन ट्रेडर्स। ठीक, ट्रेडर्स मुस्लिम भी थे, जैन्स भी थे, हिंदूज भी थे। और यहाँ अब आपको देखना पड़ेगा जो मेनली जो कोस्टल ट्रेड हुआ करता था, वहाँ मारवाड़ और गुजरातीज बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। मीन्स ट्रेडर्स जो कोस्टल ट्रेड में डोमिनेंट थे, मारवाड़ीज, और अभी भी आप देखेंगे ये बहुत बड़ी ट्रेडिंग कम्युनिटी कहाँ है, इंडिया में, मारवाड़ीज और गुजरातीज। और गुजरातीज तो आपको पता ही है कि वो ट्रेड में कितना ज़्यादा बिलीव करते हैं, और उनकी ट्रेडिंग फैमिलीज अभी सदियों से चलती आ रही है, मारवाड़। और इनमें मेनली मारवाड़ और गुजरातीज में ज़्यादा कौन हुआ करते थे, हिंदूज, मुस्लिम भी और जैन्स भी, मगर मेनली इनमें हुआ करते थे जैन। इसलिए जैन कम्युनिटी पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थी, बिकॉज दे बिलीव्ड इन ट्रेड, वो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे, तो वो कम्युनिटी पहले से ही प्रॉस्परस हुआ करते थे, मेनली जैन्स। मगर देयर वर आल्सो मेनली जैन्स हुआ करते थे, और हिंदूज और मुस्लिम्स भी हुआ करते थे। ठीक है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज वेल। और जब ओवरलैंड ट्रेड की बात करते हैं तो वो ज़्यादातर मुल्तान के थ्रू हुआ करता था। तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, वहाँ से ट्रेडिंग कारवां जाते थे, तो वहाँ मुल्तानीज एंड बोहराज, मुल्तानीज हुआ करते थे। और मुल्तानी, और इसमें मुस्लिम जो कहलाते थे, जो वो बोहराज हुआ करते थे। और आपको पता है बोहराज फेमस है, यू नो, फॉर सम अनदर रीज़न एज वेल, तो वो आप देख लेंगे किस लिए है। मगर यहाँ तक हमें जहाँ अभी इंटरेस्ट रखते हैं इस बात के लिए, दैट्स अबाउट देयर प्रॉस्पेरिटी इन ट्रेड। तो मुस्लिम्स में जो मारवाड़ीज और गुजरातीज में ज़्यादातर जैन हुआ करते थे, और मारवाड़ीज भी प्रेजेंट, जैसे वहाँ मुस्लिम्स भी हुआ करते थे, और मुस्लिम कम्युनिटी जो उसमें प्रेजेंट हुआ करती थी, दैट वाज प्राइमरली अ बोहरा कम्युनिटी। और जो ओवरलैंड रूट में ज़्यादातर ट्रेडर्स थे, they were Muslims plus some Hindus as well। तो वो मुल्तानीज उनको कहा जाता था, Muslims plus Hindus, M plus H, I am writing in short form, M stands for Muslims, H stands for Hindus। तो ये ओवरलैंड ट्रेड में ज़्यादातर डोमिनेट हुआ करते थे। वेरी प्रॉस्परस कम्युनिटीज, यू कैन स्टिल हैव फाइंड, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस। इनफैक्ट इनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड थी वो अभी भी देखे जाते थे, क्योंकि बहुत रेज्ड प्लेटफॉर्म्स पे घर हुआ करते थे, मल्टी स्टोरीड घर हुआ करते। इनके कपड़ों का ढंग चूँकि प्रॉस्परस थे,
बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे। इनफैक्ट वी कैन कंपेयर कि इनकी नोबल्स की से भी जो इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी ज़्यादा कह सकते थे, मीन्स ये किसी से पीछे नहीं थे। दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक मोबिलिटी कैन डू। यू ऑलवेज नो दैट जब इकोनॉमिक मोबिलिटी हो जाती है तो सोशल मोबिलिटी होने के खुद ब खुद बहुत सारे चांसेस होते हैं। दोज हु अंडरस्टैंड द सोशोलॉजी, दे नो इट concept, they know this concept very well, how important is economic mobility during and how it has transformed the life of various socially deprived classes. ठीक, these were important aspects of British trading industry, but we have some important introductions during the year जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे यहाँ इसमें जो आपके लिए सवाल बन सकते हैं और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट टॉपिक टुमारो, क्योंकि आज ये लेक्चर फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड हमारा जो सेकंड लेक्चर है दैट्स अबाउट इकोनॉमी विल बी स्टार्टिंग अ वाइल, तो कुछ देर में वो स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आई विल टेक अ लीव फ्रॉम दिस लेक्चर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अ पेशेंट हेयरिंग। और आपने अच्छी तरीके से सुना, मगर हिस्ट्री का ये रिवाज है कि आपको रिवाइज अच्छे से करना है। जब तक आप अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे, दिस इज़ गोइंग टू हैव अ हैवी टोल ऑन योर माइंड, ऑन योर मेंटल स्ट्रेस। तो प्लीज़ रिवाइज दिस टॉपिक्स और अच्छे से समझ के पढ़िए। मेक गुड यूज़ ऑफ योर स्टैंडर्ड बुक्स। आप जब समझेंगे सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली ठीक हो ही जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।